Good evening, everyone, and a warm welcome to the Pause Effect. And welcome back to those who have already been joining our podcast for mm, uh, many months. I am Rusha Chowdhury, and I am a person who stammers from Kolkata. And I got this wonderful opportunity to host this podcast along with my friend Vidya. Uh, the Pause Effect is a podcast presented by the Indian Stammering Association, which delves deeply into the questions surrounding stammering, communication accessibility, ease, empowerment, and it even goes beyond to discuss intersectionality, disability, care, and access in general, so as to ideate a holistic way to understand the barriers, challenges, as well as our victories over them as we go along in our journey of stammering. Um, just before starting, we would like to set a few norms. Um, One is that please always let the speaker finish what they are saying. If you have any kind of burning questions, any thoughts, reflections, please feel free to use the chat box or just raise a hand if you want to go vocal with that. That is one norm. And we do encourage a lot of conversation, curiosity, and just speaking in general. So please keep the chat box engaged. And over to Vidya. Yes, thank you, Rusha, for this lovely introduction. Hi, everyone. My name is Vidya, and I am a person who stammers. Welcome to this special episode of the Pause Effect podcast, where we are celebrating the International Stuttering Awareness Day. So a little bit about this day. It was first established in 1998 by Michael Sugarman. He is a prominent advocate for stuttering awareness, and now we are celebrating this as a global event where PWS like us are coming together to promote uh, and to educate and to talk more about stammering and to share our stories. And what is more, what could be more uh, powerful and enlightening than sharing our stories with, authenticity, compassion, and creativity. To start off this session, I would first like to thank everyone who are here, and uh, we have a li- list of pa- pa- p- participant with us who have already registered with our with this activity. So I would first request Rusha to welcome them all. Thank you, Rusha. Yes. Thank you so much, Vidya, for that amazing and concise information on what the International Stuttering Awareness Day stands for. Just to add one bit, the symbol which is used to actually represent stammering in the international community is the ocean, the ocean waves. And just like the waves of the ocean, I see so many amazing people with their pulls and pushes. And I am really, really excited to hear all of your stories. Just like all the tides and waves have their own stories in the wide ocean, I am really, really looking forward to yours. So, welcome everyone, and especially those who have registered. We are really looking forward to hearing your story. Mr. Gambhir Singh, uh, uh, please, the stage is yours.
थैंक यू रुषा मैम। मेरे को थोड़ी सी इंग्लिश कम आती है, अगर आप मेरे को थोड़ा सा हिंदी में बोलोगे कि आज का टॉपिक या क्या है, किस विषय में बोलना, तो थोड़ा सा मैं समझ जाऊंगा। मेरी थोड़ी पुअर है इंग्लिश। उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा और इसके बीच में बोलना भी चाहूंगा, प्लीज। ठीक है, ठीक है, एब्सोल्युटली। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं ट्राई ट्राई करूंगी। तो फिर मतलब आज का टॉपिक है इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे, जो एक ग्लोबल इवेंट है जहाँ पे सारे दुनिया के जो स्टैमरर्स है वो अपने स्टोरी शेयर करते हैं, और फिर मतलब बहुत बहुत जगह में इवेंट्स होता है, तो कि मतलब सबको स्टैमरिंग क्या है, इश्यूज क्या होते हैं, हम कैसे एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं जहाँ पे जो स्टैमर करते हैं वो अच्छे से बोल पाए, और मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे। इस दिन ये सब होता है। तो फिर आपने रजिस्टर किया था कि आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, और आपके पास 5 मिनट्स है, सो प्लीज गो ऑफ। मेरा नाम गंभीर सिंह पंवार है, और मैं उत्तराखंड देहरादून का रहने वाला हूँ। और मैं आर्मी में जॉब करता था, और मैंने 24 इयर्स आर्मी में जॉब करी है। और मेरे को पेंशन आए हुए 6-7 साल हो गए है तकरीबन। और मैं अब इंजॉय कर रहा हूँ अपनी आर्मी की जॉब करके। और मेरे को तीसा तीसा से जुड़े हुए 7 साल हो गए तकरीबन। अभी मैं अपनी स्टोरी थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी है, मतलब ये मतलब पेश करूंगा कि मेरे को आर्मी में कहाँ कहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। आर्मी में मैं 1995 में भर्ती हो गया था है। तो 95 से 2015, दो दो 2015 में मैं तीसा में जुड़ा था। तीसा में भी मेरे को मतलब किस टाइप से मैं जुड़ा हूँ कि मैं एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। तो वीडियो देखते देखते एक वीडियो मैंने अपने सचिन श्रीवास्तव सर की देखी है कि मैं देहरादून विकास नगर हरपतपुर से बोल रहा हूँ। तो मेरे मन में आया कि हकलाने का भी कोई मतलब जो है डॉक्टर है। तो मैंने अभी मैं जब छुट्टी जाऊंगा तो मैंने कहा मैं सचिन सर से एक बार जरूर मिलूंगा, चाहे उनको कैसे ढूंढूं, मैं किस तरह से ढूंढूं। तो मैंने उसी टाइप से जब मैं छुट्टी आया तो उनको ढूंढने की कोशिश करी। मैंने कहीं आदमी को पूछा तो वो मेरे को मिल गया। मैं बोला थैंक गॉड, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी स्टैमरिंग एकदम ठीक हो जाएगी, मेरा हकलाना अब मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मेरी स्टोरी पूछी, सब कुछ ये। तो जब फिर मैं उनके साथ जब मिला के, तो उन्होंने मेरे को तीसा के बारे में बताया। तो उन्होंने मेरी प्रैक्टिस भी खूब करवाई, लेकिन मैं जो उन्होंने बोला वो चीज़ मैं नहीं कर पाया। मतलब जैसे कि हर रोज बाहर जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बाउंसिंग के साथ, प्रोलोंगेशन के साथ, अननोन आदमी के साथ मतलब बोलना है, वो मैंने कभी नहीं करी उसके बावजूद भी। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी अपनी आर्मी की जर्नी आप लोगों को बताऊंगा। जब मेरी 1995 से 2015 के बीच में जब जब मेरे को ये मालूम नहीं था कि हाँ भाई स्टैमरिंग के लिए हमने मतलब स्टैमरिंग को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो क्योंकि आर्मी में क्या है कि जैसे एक तो है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन। आप कहीं पे भी वो जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू होता है, और आपका इंटरव्यू लेता है कमांडिंग ऑफिसर। तो आर्मी में क्या है, एक ही साथ इंटरव्यू होते हैं। मतलब जैसे जो छुट्टी जो जाने वाले हैं या आने वाले हैं, कोई किसी
कोर्स से आया है या कहीं से वो ड्यूटी करके आया, तो सबका इंटरव्यू एक साथ होता है। और अक्सर एक इंटरव्यू में जब होता है तो उसमें कम से कम 25 से 30 आदमी होते हैं, मतलब हर रोज इतने आदमी इंटरव्यू में खड़े होते हैं। और एक साइड से उनको जो है वो बोलने पड़ता कि आप कितने दिन की छुट्टी गए, मतलब पहले अपना आर्मी नंबर, फिर आपका नाम, फिर आपका रैंक, और कितने दिन छुट्टी गए थे, किस लिए गए थे, या कहाँ से आए थे, कौन से कोर्स में गए थे और कौन से कोर्स करके आए, आपको वहाँ पे क्या मिला कोर्स करने से। तो ये चीजें सब कुछ मतलब वहाँ बोलने पड़ती थी। तो जब मैं स्टार्टिंग में, जब आर्मी में मेरी जब जर्नी शुरू हुई, तो मेरे इतने ब्लॉक आते थे, इतने ब्लॉक आते थे। तो जो भी अफसर होते थे, जैसे ये जो कमांडिंग अफसर होता है वो और साथ में एडजुटेंट साहब होता है हमारा, और ये जो सूबेदार मेजर होता है, आरएचएम होता है, सीएचएम होता है, इतने आदमी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं। तो मेरे को बोलता है, यार आप बोलने में डर जाते हो, ऐसा हो। तो मैंने कहीं आदमी को ये भी बोला, मतलब ये साहब लोगों को मैं बोला, सर मैं डरता नहीं हूँ, मेरी हकलाहट हो जाती है, मेरे से जो है बोला नहीं जाता। नहीं नहीं, कि आप ये डरते हैं। तो ऐसे मेरी ये जर्नी जर्नी मतलब ये चलती गई। तो मतलब इसी तरह से मैं फेस करते करते जो भी आया मुंह से जल्दी जल्दी बक दिया। फिर मैं 2015 के बाद थोड़ा सा मेरे अंदर आया कि एक लंबी सांस लो, आराम से, रिलैक्स पोजीशन से। उसके बाद मैंने जब बोलना किया तो मेरा इंटरव्यू, मतलब जो बोलना था वो अच्छा हुआ, कि आराम से सांस लो लंबी। श्रीमान, मेरा नंबर 15388134 के हौलदार गंभीर सिंह पंवार, मैं उत्तराखंड देहरादून से 40 दिन छुट्टी काट के आया। मैं किस काम के लिए गया था वो चीज मतलब बोलना पड़ता था। लेकिन यह है कि उसके बाद मेरे ब्लॉक आने इतने नहीं थे, मतलब यह चीज मैं आराम से जो बोल लेता था। लेकिन जब आर्मी में क्या है, जो फीडबैक देने के लिए जाते हैं हर रोज जो शाम को, तो उसमें मेरे को फिर आई मतलब प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको भी फेस किया। लेकिन जो एक अभी भी मेरी स्ट्रीमिंग मतलब पूरी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो मेरा कहना है मतलब यही है कि थोड़ा सा अगर हमें इसे ठीक करना है, ओवरकम करना है, एक तो पब्लिक के बीच में जाओ और अपने घर से शुरुआत करो। अपने घर में हकलाने के लिए शर्माओ मत। अपने यार दोस्त जिनके साथ आप उठते बैठते हो हर रोज, उनके साथ अगर आप थोड़ा सा हकलाओगे तो आपको बाहर जाके कम प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं भी उसी में से था कि मैं अपने घर में कभी हकलाना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे को बाहर जाके ज्यादा ब्लॉक आते थे। तो थैंक यू बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरे को 5 मिनट दिए थे, तो मैंने हो सकता कि आप लोगों का ज्यादा टाइम ले लिया होगा। थैंक यू। नो नो, आपने एकदम ठीक समय में मतलब फिनिश किया है, और क्लैप्स फॉर यू। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। आप तो टीसा के बहुत ओल्ड मेंबर है, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। तो या लाइक इट्स रियली रियली ग्रेट टू हियर फ्रॉम लाइक ओल्डर मेंबर्स ऑफ टीसा, जो मतलब इतना जो मतलब जिनका एक्सपीरियंस है। so like for those who speak, like don't speak हिंदी, जो मतलब हिंदी मतलब उस मतलब ज्यादा नहीं समझते हैं, लाइक आई विल जस्ट ट्रांसलेट इट फॉर लाइक इन इंग्लिश। मैं अ, अ, गंभीर जी की स्टोरी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रही हूँ थोड़ा सा। तो गंभीर जी इज फ्रॉम उत्तराखंड, एंड ही इज अ रिटायर्ड like army officer, and he joined TISA 7 years ago, and he started actually getting in touch with TISA from 2015, and he had been in the army since the 1995. And he actually faced a lot of issues in the army with his stammering when uh, like when he used to actually get his interviews done, or any kind of meetings. The officers and the superiors there would actually ask him why he is not being able to speak properly, and the question that they would ask is that, are you scared? But he tried to explain that it's not fear that is making his speech stop, but the fact that you know
it is stammering. तो फिर मतलब stammering is not something that they really like understood, और मतलब फियर का एक क्वेश्चन आ जाता था. सो वन मैसेज दैट Gambhir ji gave is that, if you want to actually stop struggling with your stammering, something you need to do is like, go out into the open, face your fears, talk more in public, and do not feel ashamed to stammer in front of your family. I think ये मैसेज जो आपने दिया कि अपने फैमिली के साथ स्टैमर करने में शर्म मत करो, आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज कि मतलब हम शायद ये मतलब रियलाइज नहीं करते हैं, बट हमें शायद बहुत ज्यादा शर्म आती है अपने फैमिली के सामने ही स्टैमर करने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड जस्ट वन थिंग आई विल ऐड कि मतलब आपने आप लाइक आपके आर्मी के दिनों का एक्सपीरियंस शेयर किया है. मैं रिसेंटली मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और डिसेबिलिटी राइट्स है, वहां पे लाइक आई वाज लुकिंग कि स्टैमरिंग इज एक्चुअली seen as a disability and often a criteria जिससे आर्मी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता भी है. So like let us take this as an opportunity to also extend this awareness to the army people so that there is more uh, acceptance over there. So thank you so much, Gambhir ji, for your story. So we were actually also planning to like open up the space for anyone who would like to share. मतलब हम ये भी प्लान कर रहे थे कि मतलब आज का जो स्पेस है ये स्टोरीज शेयर करने का स्पेस है. मतलब आपकी जर्नी कैसी रही है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या सीखा अपने लाइफ से एज अ स्टैमरर, ये सब शेयर करने के लिए. तो फिर आप लोगों में से अगर कोई भी शेयर करना चाहता है, प्लीज raise your hand and we can go one by one. Yes, I see. Uh, uh, Nirmal first. You can go ahead. तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैंने भी टीसा का सबसे पहले नाम कब सुना था, लगभग 2016-17 के आसपास। कि मैं जब कॉलेज में गया अपने, तो मुझे स्टैमरिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने कहा कि अब तो इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा स्टैमरिंग का। तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे स्टैमरिंग के बारे में सर्च किया, तो बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट के वीडियोस आए। तो ऐसे करके मैं कुछ स्टैमरिंग के ग्रुप से जुड़ गया। वहाँ वहाँ मुझे एक एक व्यक्ति ने टीसा के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि हम आपको टीसा ग्रुप में जोड़ देते हैं। तो मैं आपको टीसा ग्रुप में जुड़वा देता हूँ। और शायद ये मेरा लक था कि सही समय पे मैं टीसा से जुड़ गया। तो क्या हुआ कि अ, जब मैं टीसा से जुड़ा तो मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे ये समस्या को 100% क्योर करना है। अगर मैं कहीं सुनता था कि स्टैमरिंग 100% क्योर नहीं होती, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और मैं खुद को ये मनाता था कि नहीं, 100% मुझे क्योर करना ही है, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ना ही ना मैं करियर में कुछ कर पाऊंगा, ना कुछ मैं मैं अपनी लाइफ स्टैमरिंग को पूरी तरह खत्म जब तक ना कर लूं तब तक मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मैंने सबसे पहली टीसा की नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी भोपाल में। और वहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो सब एज ग्रुप के, सब अलग अलग प्रोफेशन के लोग यहाँ मौजूद है, और सब अच्छा कर रहे हैं। और और सबकी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस है, अलग अलग मुश्किलें भी हैं। और वहाँ पर बहुत बहुत सारे
स्पीकर भी थे जो अलग अलग बैकग्राउंड से थे। कुछ मुझे याद है कि वहाँ एक एक व्यक्ति आए थे जिनके दोनों पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने ऑटो की बहुत लंबी चेन स्टार्ट करी थी। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर कुछ फिजिकली या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद बहुत अच्छा अपनी लाइफ में किया था। तो वहां से मुझे टीसा में स्टैमरिंग के बारे में एक्सेप्टेंस का पता चला। और कुछ 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 चीजें मेरे लिए जब टीसा नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं गया तो एक बहुत ही नई थी, जैसे बाउंसिंग टेक्निक, वॉलेंटरी स्टैमरिंग, आइसबर्ग फिनोमिना जो एक है स्टैमरिंग का। और मैंने वहां जाके पहली बार स्टैमरिंग के साथ में वहाँ स्टैमरिंग होते हुए भी मैं खूब हंसा, खूब खूब मस्ती करी। वहाँ ऐसा नहीं था कि यार स्टैमरिंग हो रही है तो एक कि बहुत उदास, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो उससे पहले यही था कि जिस दिन स्टैमरिंग हो गई उस दिन उस दिन पूरा डिप्रेशन में चले जाना, दिन भर यही थॉट्स आते रहते थे जिस दिन बहुत सीवियर स्टैमरिंग हो गई। लेकिन टीसा में जाने के बाद, आने के बाद ये सब चीजें सीखी। उसके बाद फिर कुछ मैंने एक दो वर्कशॉप भी ज्वाइन करी, जहां से भी कुछ चीजें मेरे अंदर जिनके सीड आए और मैंने फिर उनको नर्चर, मतलब उनको थोड़ा सा अपने अंदर अपनाया, जैसे लिसनिंग का या अपनी अंडरस्टैंडिंग का या कम्युनिकेशन की और भी चीजें। तो टीसा से बहुत बहुत फायदा मिला है। और इसके लिए मैं टीसा के हर एक व्यक्ति का और सचिन सर का हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मन से कि ये चीज हमें एक गिफ्ट की तरह मिली है कि जहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। और हमें कुछ ट्राई करना हो स्पीच के बारे में तो हम यहाँ आके अपने ऊपर काम कर सकते हैं। थैंक थैंक यू। यू सो मच निर्मल जी, आपका स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैप्स फॉर हिम प्लीज। So like for those who speak in like who don't speak Hindi, I'll just quickly translate it. So Nirmal ji used to face a lot of issues with speech and stammering when he was in college, and like he had thoughts about his career and like what he wanted to do and how stammering would actually stop him from having a proper life. So he actually went on YouTube to like search for techniques or like people he could connect to like work on his speech. And a friend of him actually like helped him to connect with uh, Tisa. And when he got in touch with Tisa at the starting, he wanted, like, he had a mindset where he wanted to be cured of stammering 100 percent. But after joining the national conference in Bhopal, he he actually saw how people who stammer can actually create a safe space with each other, have fun. And he also met a lot of disabled people who actually showed him how even if you are disabled or have any kind of issues that you feel makes you lesser, even despite that you can live a fuller life. And it is the mindset that like you know if you change, your stammering will not go away, but it will also not bother you or make you struggle. And he also l- learned a lot about the techniques like bouncing, voluntary stammering, and also the iceberg, which actually helped him to educate himself and like learn more about stammering to desensitize sensitize himself. uh, निर्मल जी, लाइक आपका स्टोरी सुन के मुझे भी मतलब मेरे कॉलेज डेज की याद आ गई। मतलब मैंने भी स्कूल से लेके कॉलेज तक बहुत स्ट्रगल किया मेरे स्टैमरिंग के लिए। लाइक एक बार नहीं, मतलब ये रोज ही होता था कि आई हैड क्वेश्चंस। मुझे कुछ लेक्चर सुन के
प्रश्न होते थे जो आई वांटेड टू आस्क द प्रोफेसर्स, लेकिन मुझ में मतलब ऐसा एक चीज था कि मैं अगर उनके सामने जाके स्टैमर करूंगी, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे और सोचेंगे कि मैं कुछ वियर्ड, कुछ मतलब अद्भुत एक चीज हूँ। तो फिर मैं कभी भी उनके पास जाके बोल नहीं सकती थी, और मैं हमेशा ईमेल लिखती थी। और एक बार एक प्रोफेसर ने मुझे रोक के बोला कि आप सिर्फ ईमेल क्यों लिखते हो, क्लास में आके क्यों नहीं पूछते हो। और मुझे बहुत शर्म आई थी उस दिन। लेकिन मतलब इसमें से मतलब निकलना, ये सब भी बहुत टाइम की बात है। और फिर आपकी तरह मैं भी टीसा में आके ही थोड़ा थोड़ा करके मतलब खुद को फ्री की थी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज, इट्स वेरी रिलेटेबल एंड वेरी wonderful to hear from you. Okay, so like next we will be moving on to Likhit. If I'm not mispronouncing your name, please go on. You have Yeah, 5 minutes, 5 to 7 minutes. sure, sure. If it's okay. I'll just keep it short. It's like impromptu. So, first of all, for everyone, this happy international Stuttering Awareness Day to our fellow PWS. Yeah, yeah. uh, so basically, I'm Likith. I'm from Bangalore, and my stammering journey starts from the age of 12. So during my school days and college, basically I was not this thing aware of it much, and most of the time nobody used to like taunt me or like tease about it. So maybe that might be the reason why I was not like basically more like interested in that. Like even though I tried a few of the speech therapies, and like if you have heard of Nimans in Bangalore, it's a neuro science, like it's an hospital kind of thing. So like even I tried there also, but like none of it worked because maybe I was trying to go trying to be fluent, rather than rather than accepting it. So once I moved to my college days, that is when the reality hit me hard. So I was not able to present in front of the class or basically speak. So that is when it made me think about it, and I used to uh, back out a lot. And once I got placed into a company there, the company were like so what do you call supportive to me. So I again there it didn't cause much issue to me. But when I tried to switch my company, uh, during my interview time, there were a few questions about why I used to speak like that, or why do you stammer. uh, that is when basically I thought, okay, I should do something about it. So I started to research about any organizations. That is when I got to know about TISA SSGs. So last year, October 22nd, no, no, sorry, October 20th. So like almost a year back, I joined TISA, and it's been a year now. So I'm happy that like I have completed 1 year of my uh, TISA journey through basically a fellow PWS. Recently, I had gone to like basically Ahmedabad NC, where I like basically 3 days of it. I was not aware that I used to stutter, and like, I just enjoyed, rather than thinking about how I speak, or basically how I speak or how I pronounce words, or or stutter or not. A few things which basically a few things I took
from that NCR, we should first accept ourselves, because without accepting ourselves, then we can't tell others, or basically awareness to others as well. So the first step is, we should accept ourselves. And like other few things which I learned, or the techniques I has to follow, or the mindset, the meditation, or a self awareness of oneself. Apart from that, today I want to share one more thing. Like, for these many days I had not posted about TISA or SSG on my Instagram, so this is the first day I am sharing. So hopefully, from today onwards, I will be uh, basically open up about it and tell to others as well, and to awareness others about TISA and people who stammer. So that's it from my end. Thank guys. Thank you so Wonderful. much, Nikhil, for that. Vidya, you want to go on? Yeah, I mean, just I'm so happy for Likit. Like I mean, I saw his post in the Instagram, and I was so happy that he has shared it. And thanks for being open about your experience. And this one small step will have a ripple effect. People would start conversations. So all these things are really valuable in spreading the awareness among general public. Yeah, thank you, Likit. Thanks. Yeah, thanks. Yes, honestly, thank you so much for sharing your stories. Like, for those who speak हिंदी, मैं मतलब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, my bad English. So लिखित बैंगलोर से है, और मतलब अ, उसने मतलब आगे आगे अपने स्टैमरिंग को लेके इतना ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि स्कूल में मतलब उसको जो टॉन्ट मॉकरी जो होता था वो बहुत लेस होता था। लेकिन फिर भी वो मतलब अपने स्पीच को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल करता था, इसीलिए वो स्पीच थेरेपी के लिए निमहांस बोल के एक इंस्टीट्यूट में अ, गया था। लेकिन वहां पे स्पीच थेरेपी लेके मतलब उसको कोई फल नहीं मिला। मतलब इसका एक रीजन वो बोल रहे थे कि मतलब उन्हें फ्लुएंसी चाहिए था, एक्सेप्टेंस नहीं। फिर उसके बाद जब वो कॉलेज में थे, वहां से उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि शायद मुझे मतलब मेरे स्टैमरिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा, क्योंकि राइट नाउ मुझे प्रेजेंटेशन करना होता है और बोलना होता है, जो मुझे बोलने में थोड़ा सा स्ट्रगल आ रहा है। तो फिर वहां से वो स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा करके। फिर जब वो प्लेस्ड हुआ एक कंपनी में, वहां से मतलब उसको सपोर्ट मिला स्पीच को लेके। लेकिन वहां से जब एक दूसरी नौकरी में वो गया, वहां पे मतलब उसके स्टैमरिंग को लेके सब लोग पूछ रहे थे, जो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाया। लेकिन लेकिन ही एक्चुअली टुक दैट अपॉर्चुनिटी, उसने वो अपॉर्चुनिटी लिया टू लाइक एक्सप्लोर स्टैमरिंग मोर। एंड देन इन 2024 20th अक्टूबर को वो टीसा में ज्वाइन किया। और मतलब इस ईयर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लाइक अहमदाबाद में हुआ था, वहां पे वो गया था। वहां पे जाके वो एक्सेप्टेंस टेक्निक्स, मेडिटेशन का जो सब कुछ होता है, वो सब उसने देखा। फिर ऑनलाइन भी वो बहुत कुछ सीखा। एंड ही इज थैंकिंग टीसा फॉर ऑल ऑफ दैट। लेकिन one thing I got very impressed with, and like it sort of made this flower bloom inside me, is that you remember the date when you joined TISA. It's that Yeah, important for us, right?
Yes, Yeah, yes. so absolutely wonderful. Absolutely wonderful. I should have remembered my date, but like it's okay. Thank you so much for your story. Okay, we will now move on to Ankit. Stage आपका है, please. बोलिए. Okay. Good evening, everyone. Uh, मेरा नाम अंकित पटेल है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और देखूं I think Ankit ji left because of bad connection. It's okay. We will have him back if he rejoins again. In the meantime, Deepraj ji, आप जा सकते हैं. मतलब आप बोल सकते हैं. Bad Hindi. Hello everyone, my name is Deepraj Rani. I am from Goa and I have completed my Bachelor of Engineering in Electronics and Communication Engineering. Yes, and I have stammering in my I used to when I had educated that I used to stammer or what was to lead. But that you started then use for the meeting or uh, age due to humble. Then afterwards they told that when I got years that time I only got family, but late my family turned in years severe now theater is like sometimes during the stressful situation I like that I don't have my mouth, but means it is like I don't have mouth, but I have my thoughts, but I can't convey it. Means I cannot able to convey it to others. I mean sometimes I think like that, but means now I will tell when I have joined TISA. So I am new member to TISA means I have joined 2 months ago. Yes, and after joining TISA, I realized that writing and reading is not a solution for we should write and we should feel bad after time or understanding. That was my biggest mistake. That's why it increased so much. After learning this, I came to know that we should have it and we me many others are doing it and although they have reached their dream position also and we can any despite of having so stammering is the problem. It means uh, means uh, time opportunity is the maybe we want them that we think that we have so we will not perform well. So we decline on the opportunity. So after joining this, I
realized means many stammerers are there, they don't feel bad for them. And I now I mean I from from that we should stammer to all other people that what is the and what is the main yeah, 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 this I wanted that we थैंक यू सो मच दीपराज जी आपका स्टोरी शेयर करने के लिए। थोड़ा थोड़ा बीच में आई कुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ a bad internet connection, I think, either from my end or from yours. But something which I really loved how you mentioned is the fact that when you stammer, you feel like that you don't have a mouth, but just your thoughts. तो फिर मतलब जो लोग हिंदी बोलते हैं, दीपराज जी ने बोला कि मतलब वो जब स्टैमर करते हैं तो फिर उनको लगता है कि मतलब उनका माउथ नहीं है, मतलब बोलने का मुंह नहीं है, बट उनका थॉट्स है सिर्फ, मतलब स्टैमरिंग के बारे में सिर्फ सोच सोच, मतलब उस बोझ में रहते रहते मतलब उनका मतलब कंडीशन और भी खराब हो जाता है। और फिर जब वो किसी और को समझाना चाहते हैं, वो लोग समझना मतलब नहीं चाहते हैं मतलब उतना। आई थिंक यू रियली sort of gave like gave words to what a lot of us actually feel, right? Like when we are stammering and like are very nervous about like something, so that was very relatable. um thank you so much for sharing your story. मुझे सिर्फ एक like चीज बहुत सैड लग रही है कि मतलब मेरा शायद इंटरनेट हो चुका है, इसलिए आपका स्टोरी मैं अच्छे से नहीं सुन पाई। लेकिन प्लीज डू शेयर योर स्टोरी ग्रुप्स। आप तो मतलब टीसा के ग्रुप्स में तो written books as well. So yeah, thank you so much. Next we have I would like to say uh, one thing. Ayush ji. Yeah. So, like, if you want to share one message to the, employees, employers, what you would like them to know about people who stammer, because there are a lot of misunderstanding from them. Like, I want you all to just come up with one sentence about what you all want to, you know, them to know about stammering. Yeah. would like to share you one incident. I recently answered one interview, my second interview. So I when I reached and do means when I reached there, after immediately after reaching, my anxiety becomes high. So I felt like I should quit this interview and go back home. But what I did, so this is not I felt like this is not a solution. So uh, if I give up now, then I will give up I my habit will become that giving up always. So I answered that, and from the TISA members I learned that we should tell them to whoever we talk with, so we should tell them before starting conversation. So I started with that I have stammering problem, so please sir, I may take some time to complete my sentences.
So after that, he told me that take your own time, means no problem. So after that, I I felt very better than before. So means I didn't have means working experience. So I that's why I shared this incident with you all. So after joining TISA, I came to know how to handle it. Yes. Thank you, Deepas. Thank you so much. Uh, so we have Ganesh Bose now. Would you like to share, Ganesh? Yeah. So hello everyone. I think so. It is good evening, only. Yeah. So it's like okay, so my name is Ganesh Bose. So I'm basically from Mumbai, Maharashtra, and my hometown is Hyderabad. And so I have been having this timing since my childhood, and coming to the core. Sorry, it's like so during my childhood days. So awareness so was not there. uh, Due to that reason, so I faced a lot of like bullying stuff uh, during my school days. And fast forward, get, get to now. So presently I'm having 6 years of work experience. So into the like multinational company. So I'm working for like a USA client into the capital market and finance domain. And I recently completed the MS in finance. So the story, it's like I think the corporate organizations. So cats like to different kind of disabilities. Uh, so due to that reason, the employer can consider they can consider that specific disability. So they can give some concession during the interview process. But in the case of us, so it's like so I have been searching for the job since last, I think, 8 to 9 months, from January till September. So I given the interviews with like top notch companies. So it is Morgan Stanley, JP Morgan Chase, and I think so whenever the interview gets started, and I used to get like nervous, and after the nervousness, so that's same cycle. So it is on the loop. So after the anxiety, nervousness, and the stammering, I think due to that reason, so I faced literally 20 to 30 rejections. So I think it is like more rejection than my dating life. And so coming back to the point, उसके बाद उसके बाद तो सितंबर में क्या मेरे को मतलब तो दो ऑफर लेटर मिला क्या मतलब कहते कंपनी का तो इंटरव्यू ने पूछा कि क्या था आपने बहुत ज्यादा टाइमिंग किया मतलब तो इंटरव्यू के टाइम तो मैंने क्या सोचा क्या तो अभी इसको तो पता चल गया है एक काम करता हूँ क्या था एक्सेप्ट ही कर देता हूँ हाँ मेरे को मैंने क्या एक्सप्लेन किया उनको कि हाँ तो मेरे को इट्स लाइक इंटरव्यू के टाइम क्या था एंजाइटी होता है नर्वसनेस की वजह से क्या तो मेरे को हुआ टाइम भी एंड क्या था ऑफिस के टाइम मेरे को तो इतना नहीं होता है क्योंकि इट्स लाइक टेम्पररी स्टैमरिंग है सो इट्स लाइक क्या मतलब एक टाइप का कॉमेडी सीन भी था तो और थोड़ा मतलब क्या था अवेयरनेस क्या था अवेयरनेस वाला स्टफ ने मतलब कॉर्पोरेट्स में एंड एट द सेम टाइम आई थिंक सो इट्स लाइक अपना स्पीच रिलेटेड भी है अपन को जो भी तकलीफ so that corporates should also account the same uh,
so while hiring the candidates. And my main message on this International Stammering Day, it's like uh, after the school college, I think majority of तो मैंने recently क्या था अहमदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अटेंड किया था. और इट्स लाइक क्या था आई सॉ कि more than 50% of people are into the like government job stuff. It's like गवर्नमेंट जॉब के पीछे काम करे. इट्स लाइक खुद से एडवांटेज है. इट्स लाइक एक बार जॉब मिल गया तो स्टैमरिंग ये नहीं ये क्या तो वो बात की बात है. आई थिंक क्या था ऐसा नहीं वो के क्या मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी क्या था अवेयरनेस हो और क्या था एम्प्लॉयर भी तो रिकग्नाइज करे क्या ताकि हमारा करियर भी इट्स लाइक स्मूथ एंड स्टेडी हो सके. सो आई थिंक दैट इज वोल्ड मैसेज. So thank you, Rusha and Vidya, for organizing such a beautiful meet. That's really insightful. Yeah. Thank you to you for sharing your story, and doing it in two languages, like reducing my work a little bit. So Yeah. yeah, like I think like I really like agree with your experience in like looking for a job. Like I had a similar kind of an experience. Like I Mhm. think like I was lucky enough कि like I did not get many rejections. I also did not apply to many jobs, like a few, and like those worked out for me. But I did have an like like an experience with an interview, which was very weird. So Okay. yeah, like I'll just like in very short, just like translate the bit in English into Hindi. मतलब गणेश जी मुंबई से है और फिर मतलब जब वो मतलब स्कूल में स्टैमर करते थे तब मतलब वो मतलब उनको बुलिंग फुलिंग सब होता था बिकॉज मतलब उस समय में अवेयरनेस वैसा नहीं था. और फिर आफ्टर दैट व्हेन ही वेंट टू कॉलेज वहां पे जाके आई थिंक यू सेड कि थोड़ा थोड़ा करके यू आर ट्राइंग टू चैलेंज मतलब अपने स्पीच का स्टैमरिंग का जो स्टिग्मा होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके चैलेंज वो कर रहे थे. फिर मतलब अभी वो 6 years वर्किंग है एमएनसी में काम करते हैं. So I think that was the bit you said in English, or the stuff that you mentioned in Hindi. So just to say it in English, so he has found that like in jobs like after you graduate from school and college, the working world is a little more like open to understanding what like stammering is. And he also came to the NC like national conference in like Ahmedabad, and he met many people who are in the government sector. And like I think he said that he also met some people who are in the private sector, and his message to the world is that like talk more about stammering in workplaces so that the interview process goes more smoothly, and like people try to make space for diverse ways of speaking rather than just one. And I think it is specifically true for like MBA jobs, because a lot of my friends are in MBA, and I have heard from a few who stammer actually face a lot of issues regarding their speech because they want everything to be fallacy also. So thank you so much for sharing your story, Yeah. Ganesh ji. I Thank you. thought you were a Bengali because your No, title I is am. Bose, but Yeah. you are not. No, I am not. Okay, okay, got So, it. Okay, it no is problem. so kind of scam it's going. So I'm a Okay. South Indian. Yeah. So Yeah, I want to tell like one solely one that's like I given the interview approximately 30 to 40 rejections. That is I think used. So after that I get to use to rejection component. Yeah. Yeah. So after Yeah, that makes I sense. Like got it something. really bears you on. Yeah.
Thank you so much for sharing your Sure. journey. Thank you. Vidya, do you want to take it up from here? So yeah, I mean, anyone ge- ge- else would like to share their story? Uh, please unmute yourselves. Yes, Santosh. Um, Yeah, hi. Uh, Hello and good evening, all. Uh, Myself Santosh Khaire. I am from Bangalore. Likit, Vidya, Tapan, we are all from Bangalore SAG group. So we meet often. Yeah. About my journey, I will keep it short. So I am 49 now. So I have struggled with my stammering since for almost 45 years. So after 45, there was a turning point in my life during the lockdown period. So before that, I have tried a lot of speech therapies. I've consulted few doctors, but nothing worked for me. I struggled during my school days, colleges, as we all have the same stories. But during lockdown period, I have gone through one online speech therapy course. That there I got to learn that 90% of our stammering is related to our mindset, and 10% of that problem is related based on the situations, how we deal with the situations. So once I changed my mindset regarding my stammering problem, so I got to know the root causes of my blockages and my anxiety. Then I started working on that, and I set a goal for me, some short term goals to overcome my speech problem, and I got good results after that. Then I started exploring myself on various platforms. Like there is an app called Stamurai and Tisa and other platforms as well. So I tried to expose myself. I practiced which wherever I got opportunities. Earlier, I was not able to update my work status in my company, but now I have started updating my work status as well. So after joining TISA, I started attending these launch meetings and started hosting it. By hosting, actually, that boosted my confidence. So by hosting a lot of meetings, that was the major boosting for me. Then now I have started hosting the debate sessions as well in TISA. So, so this is giving me a good boost confidence for me to speak, to face various situations and apply the techniques wherever it is required, not all the time. So that's it from my side. Thank you all. Thanks for this opportunity. Thank you so much, Santosh. Thanks for sharing, your the way you handle your stammering journey and mindset. So, do we have anybody else who'd like to share? Like Joshua, would you like to share? You want? I think Ankit ji did Oh not yeah. get to finish, so Yes, you can yes, go yes. ahead. Please. वो मैं बचपन में जो था उस समय करीब 15 साल तक जो मुझे ये था कि इस दुनिया में केवल मैं अकेला बच्चा हूँ जिसको ये प्रॉब्लम है। तो जो बचपन का फेज था तो उसमें ऐसा लगता था कि ये क्या केवल पूरे गांव में, क्योंकि मैं विलेज से हूँ तो हमारा स्कूल भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते। मुझे तो खैर स्टैमरिंग थी, लेकिन जिनको स्टैमरिंग नहीं थी उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक विलेज का गांव है, एक विलेज का स्कूल है। तो लेकिन बचपन में मेरे साथ ये था कि मेरे स्कूल में 200 से 300 बच्चे थे और उन बच्चों में मैं प्रेयर करने और नेशनल एंथम करने मैं आता था। और मेरा एक दोस्त था, वो 2 लोग पूरे मैंने 3 या 4 साल उसमें नेशनल एंथम किया था और मुझे कभी स्टैमरिंग होती नहीं थी।
तो मेरे स्कूल में एक मिक्स्ड वो था कि जो है कि और टीचर्स को लगता था कि मुझे स्टैमरिंग होती है, तो ये ऐसे चलता रहा। उसके बाद 2018 में उसके बाद हाई स्कूल के बाद मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद 2018 में जब मुझे स्मार्टफोन मिला तो मैंने यूट्यूब पर ऐसे एक दिन सर्च किया कि ये जो हकलाहट है, मैंने हिंदी में ही लिखा हकलाहट, तो उसमें आया स्टैमरिंग। तो मुझे पहली बार मालूम चला कि हकलाहट को इंग्लिश में स्टैमरिंग कहते हैं। तो उसमें ढेर सारे ऋतिक रोशन से लेके ऋतिक रोशन की फ़ोटो आएगी, वो भी स्टैमरिंग करते थे। तो मुझे बहुत ये कॉन्फिडेंस मिला कि इतने बड़े बड़े लोग जो है वो स्टैमरिंग करते थे, और जिनका जिनका पूरा करियर ही इसी पे फोकस है कि वो कैसा उनका कम्युनिकेशन स्किल है, कैसी उनकी डायलॉग डिलीवरी है, इसी पर पूरा डिपेंड है। और जब उन्होंने ठीक कर लिया तो हमें तो बस अपना जीवन थोड़ा आसान करना है। केवल इतनी ही अगर हमारी स्पीकिंग ठीक हो जाए तो इतने में तो अच्छा हो जाएगा। तो मुझे एक उम्मीद मिली, तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करते करते एक भोपाल में एक एकेडमी है, फारूक सर वहाँ के टीचर हैं, तो वहाँ मैंने 6 दिन का वर्कशॉप लिया था। तो वहाँ से मुझे 5-6 लोगों का हमारा एक ग्रुप था, तो वहाँ हम स्पीकिंग करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे। तो रोज़ 5-6 घंटे हम लोग प्रैक्टिस कर लिया करते थे। तो वहाँ से मुझे एक वहाँ 5-6 दिन होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्टैमरिंग का मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमारे कॉन्फिडेंस को किल करता है। और वो हमें जो फियर ऑफ सिचुएशन है या सोशल एंजाइटी है, उसमें वो हमारे दिमाग में इतना फियर क्रिएट कर देता है कि हम कभी जो है एक एक अपना जो स्टेप है, जो मजबूती से स्टेप वो ले नहीं पाते। वो बैक ऑफ द माइंड में वो हमारे होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सारी रुकावटें हमारे जीवन में आएंगी। तो उसके बाद स्टोमराई ग्रुप में ऐड हुआ। उसके बाद मुझे तीसरा में ऐड होने का अवसर मिला। तो अगर मैं अपने ऊपर बात करूं कि स्टैमरिंग के जो ग्रुप हैं उनमें ऐड होने से और अपने जैसे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने से ये मालूम हुआ कि बहुत से लोग जिनकी स्टैमरिंग, जिनकी स्पीकिंग हमसे भी खराब है, और वो अपने जीवन में हमसे भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये वास्तव में ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये स्टैमरिंग बहुत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो एक एक मैंने इंटरव्यू फिर देखा था दीपिंदर गोयल जी का, जो जोमेटो के फाउंडर है, और उनके को फाउंडर शायद एक और हैं, उनके साथी पंकज चड्ढा करके हैं। तो उनकी मैंने एक मीटिंग देखी थी, जो उन्होंने जो डिजिटल बोर्ड है उस पर अपने एम्प्लॉय को, जो उनके अंडर एम्प्लॉय हैं, उनको ब्रीफ करते हुए एक मीटिंग ली थी। और उसमें बहुत बुरी तरीके से वो स्टैमर कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग इतने बड़े पोजीशन पे, इतना मैनेजर की पोस्ट पे ये लोग हैं, लेकिन ये लोग स्टैमरिंग को उतना महत्व तो नहीं दे रहे हैं। ये लोग अपने काम काम पर फोकस कर रहे हैं। और अगर स्टैमरिंग से रुकावट, केवल स्टैमरिंग से रुकावट होती तो जोमेटो जैसा इतना बड़ा ब्रांड नहीं बनता। तो ढेर सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है। जब मैं सोचता हूँ कि किसी भी फील्ड में मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो मैं देखता हूँ कि संगीत के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, या डबिंग आर्टिस्ट जैसे मेरठ के हैं जो बाहुबली की वॉइस को डब किए हैं हिंदी में, वो हो गए। तो किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि स्टैमरर ने अच्छा मुकाम हासिल नहीं किया है।
तो उम्र के साथ साथ और ये ग्रुप्स में ऐड होने से बहुत बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि एक्सेप्टेंस आया, और एक चीज़ और आई कि हम चीज़ों को एक हद तक कंट्रोल करने के बाद और और चीज़ों पे अगर हम अपनी स्किल अच्छा कर लें और चीज़ें अपनी अच्छी कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि स्टैमरिंग बहुत बड़ी बाधा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत लेट मुझे मालूम चला कि ये है कि स्टैमरिंग जो है दिक्कत है, ये पूरे विश्व के मतलब कि 1% एडल्ट में है। अगर इसको देखो तो 70 से 80 मिलियन लोग हैं पूरे विश्व में जो स्टैमरिंग करते हैं, और उसमें आधे से अधिक लोग सोशल एंजाइटी के शिकार हैं। उनको सोशल गैदरिंग में बोलने में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें फियर होता है, उनके दिमाग में फियर है जिसको हम सोशल एंजाइटी बोलते हैं, और उसको फेस करते हैं, और उसी में मैं भी हूँ। और ये आंकड़े 52% हैं जो बहुत डराने वाले हैं। तो मैं होप करता हूँ कि तीसरा जो है आगे और अच्छे इनिशिएटिव लेगा। कुछ हम सेल्फ हेल्प की सहायता से कुछ जो गांव के बच्चे हैं जो स्कूल्स में भी स्टडी कर रहे हैं, उनको अपने से जोड़कर उनको भी हम जो एक अवेयरनेस है, जो स्टिग्मा है या फिर जो उनका फियर है, उसको दूर करने का हम प्रयास कर सकते हैं। और आज इंटरनेशनल स्टैटरिंग अवेयरनेस डे पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और स्टैमरिंग पे मैं एक ही लाइन कहूँगा कि स्टैमरिंग एक समस्या है, केवल एक समस्या है। जैसे ढेर सारी समस्याएं हमारे जीवन में है, वो एक समस्या है, लेकिन वो 100% नहीं है कि वो केवल एक ही समस्या है। उसके बिना, उसके साथ भी हम जीवन जीना अगर सीख लें तो हमें लगता है कि उसको एक्सेप्ट करके और उसमें सुधार करते हुए, तो यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ। थैंक यू। स्टोरी शेयर करने के लिए। और फिर मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, मतलब आप जो बोले हैं, मतलब स्कूल्स में, मतलब स्पेशली विलेज वाले स्कूल्स में, मुझे लगता है कि शहर में स्कूल्स में थोड़ा थोड़ा सा मतलब अभी भी लाइक अवेयरनेस वर्कशॉप सब आ रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में, विलेजेस में इट्स स्टिल वेरी लेस, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। Like, it is an initiative we can actually look into as an organization. तो फिर हम मतलब थोड़ा थोड़ा करके we can actually intervene in schools as well, like help children who stammer. I think that is very very important. Thank you so much आपका स्टोरी शेयर करने के लिए। I think next जोशुआ जी बोलना चाहेंगे, so Okay, good evening, everyone. It's wonderful to see Vidya and Tapan was there. It's a long time I had not joined this group. Tapan bhai, are you there? Good evening, sir. Okay, Yeah, wonderful, wonderful. So, and thank you, Vidya ji, for giving me this opportunity. I mean, problem is I keep traveling so much that I keep missing out on our TISA meetings. I'm sorry for that. But from this month onwards, I'll kind of stay put here, so I could see more of you and Tapanji and the others. And Rusha also was wonderful in hosting this and uh, making points for for all the others and do all the translation. Wonderful members, Ms. Rusha. Okay, I think I'm the oldest guy in this group. But then I feel, I'm the youngest chap here because I think I've not grown over 20 years. So it's actually, 20 years plus a lot of experience. So, well, for me, it was always challenging because, all of you experienced in school, uh, my name itself was called Stammering Josh. So, they all call me Stammering Josh.
and then so as to fight. So, all my life I've been fighting, and I'm still a fighter. So I thought I should make myself physically strong. So I'm a very strong guy in the sense I mean, I don't have big muscles, but, made myself strong because, my dad was in the Air Force, and uh, we used to get posted, and guys used to pick on you in the military schools. So it was a very tough military discipline which we've been brought up, which has continued to be till today. And then the Lord was, good to me. I could get my job is I am a circuit board guy. The printed circuit boards, circuit board PCBs as we call it. It's the heart of any electronic item. So I design it, I manufacture it, and now I'm selling it. So this job took me all over the world. So I'm having a holiday for the last 30 years, company paid holiday, and I meet so many people, and then I'm selling the boards at the moment. So that was one thing which I should be grateful. So because of my stammering, I learned to work with cancer hospitals, physically handicapped centers, and now for a long time I spend a lot of time in old age homes, because old age people are so lonely there. And I mean, the children probably are in the US or UK or some other part of the world, and they've just put them there in that old age home, and there's no one to look after them. So I think you should. I took a whole group of our people, including Dinesh and team, some years back, I think a couple of years back, to just show them that it is not only stammering where we get so much focused on, that we forget there are other disabilities also, and there are people who are less fortunate, who are very lonely. So I make it a point that every week, twice a week, I go to 2 old age homes and visit and talk to all those people, because some of them, they just want you to listen to them. Then apart from that, I'm an outdoor chap. A lot of outdoor things like wild boar hunting, river rafting, hang gliding, boxing. Of course, I've been a boxer all my life, so that's kind of instilled in me a kind of confidence. But then, as I keep telling, my confidence has always been in my Lord, who I made a deal with him. I said, Lord, don't heal me of my stammering, but just empower me to talk so I can tell others about you. So yeah, that's my journey. Because like you all shared, stammering is like a psychological disconnect between your thoughts, your brain, and your vocal cords. So we need to control it. And I've seen all of us here have spoken so well. Santoshi was terrific. And Rusha, of course, don't have to tell, she's perfect. Vidya, I mean, her eloquency is wonderful, and all the other brothers and sisters. So we are like, it's a brotherhood, and it's a sisterhood, so where we could encourage each other. So thanks for this opportunity again, Vidya madam, and Rusha madam and others. God bless you all, and stay encouraged. Keep talking, and make this awareness to all. All right. Thank you again. Thank you so much, Joshua, for sharing your views and thoughts. And it's sometimes we are, as you said, we are too focused on stammering that we even forget to live our life. And you have, explored a lot of things in your life, and it's kind of encouraging others, to uh, come out of the stammering mindset and think life in a much more broader sense. True, Thank you true, so true. much. I mean, Uh, there's so many experiences. If I say, they don't believe me actually, so I just keep quiet. Like Shakespeare said, to thine own self be true, and it shall follow as the night the day. So as long as you're okay, and I mean, what you have accomplished,
You don't have to beat about your drum and make others kind of toe the line. Yeah. So thank you again. Thank you Thank so you much. so much. Listening to you was so beautiful. Like, you shared all your, experiences, and you have quite a lot of experiences. Like I loved every bit of it. But like one thing that really sort of struck me is like, when you said that you had prayed to God that, like, don't heal me of my stammering, but help me talk more freely, like, empower me to speak out, right? I think I really sort of deeply connect with that thought because, like at one point in my life back when I was in school, and also like the first few years of college, I really wanted my stammering to just go away. Like, I had a dream when I was a child is that, like, like Cinderella, someday a fairy godmother might show up and she would put that fairy dust on me and my stammering would just go away. So I Yeah. had that one wish. But like, as I grew up, I started exploring stammering and just, facing my fears going outside. And then at one point it hit me that I don't want my stammering to go away. Like, I like it when I stammer. Like, it's very thrilling, it's enjoyable. And I, like, I actually enjoy and gain more than I lose from my stammering. So thank you so much for sharing that. I think on Stammering Awareness Day, this is a beautiful message that, like, we can have. So thank you so much for that. Yep, thank you. Um, so moving on, Vidya, do you think we have time for one more person, or should we close out? One more person, Vikas Bakasra. So with him, we will close the session. Sure. Okay. Thank you very much for providing me the opportunity to speak. Basically, I have got late just because I have some work to do. So it's International Stuttering Awareness Day. So that is, as we all know, we struggle to speak a bit. So I think the awareness should be there. And actually, it has been only 2 or 3 months since I joined the Tisha group. And so let me briefly introduce myself. Recently, I have joined the TISA NC, the national conference, where I meet the and the Tapan sir as well, and the other participants. So what I learned in Tisha, that self-advocacy, self-awareness, as well as pre-shuttering, that um, voluntary shuttering. So it helps me a lot. So after joining the Tisha, uh, I can say proudly that I am a stammerer. So I also joined the SSG meeting after that through 2 3 times, which also helps me a lot in my speech. So right now, mm, I'm just I can say that I enjoy stuttering and I enjoy in my public speaking as well as presentations whenever I'm talking to my superiors or talking to the ministry. So just experience was quite good, and basically the awareness should be there, and basically it is a muscle mind connection. So there should be a coordination between our mind, our vocal muscles. Our breathing pattern is also important. I solely focus on my breathing pattern for last 3 4 months. So yeah, that's all I want to share. So basically, I'm briefly introduce myself that my name is Vikas Bagasra and I'm from Jaipur.
from Jaipur, Rajasthan, and I'm a geologist. I work in Geological Survey of India. So yeah, that's all from my side. Thank you so much, Vikas. So we will move on to Tapan and we will finish our Yeah, session. right, right. Yeah. Yeah, yeah. Good evening, guys, and good to see that there are so many, known faces are here. So Vidya and Rusha, Santosh, Joshua, and the, my story actually is same with me also as well. But just one point, and I just want to know because it is a awareness day, Saturday awareness day, and this, two ladies, Vidya and Rusha, has done a very wonderful job. But because in that world they say the girl versus boy, the stammering ratio is 1:4. But see, in that show, small world also, these two ladies just come up and they host it and because ever. But if it is opposite, if it is four girls and one boy, then I think awareness will be more than now actually. so so that's it. And about this spreading the awareness. So now because no, but what happened 2 days back, we had a Diwali party, and in that my wife, helped me to help that awareness to spread. So suddenly she said, Tapan also, Tapan go to the some meeting. He has his own group. So he so she actually better than me for this spreading this awareness, and I thankful to her. And nowadays also I feel I just open up to my very close friend circle that I also stammer, and we are having so and so meeting, and we are doing some voluntary job. But still I hold myself, I'm not completely 100% free to say to everybody. No, but we are just we did the same thing in Carbon Park and all. In the big group, we say to the uh, 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 stranger that we are so and so. But still, I think there are some we held ourselves back. We cannot speak freely about this stammering and all. But but whenever I interact, I just interact to any guy who just stammer and all. So I immediately approach him or her. So this is the thing. You can join our group. So that way I did my little 1% thing, awareness thing actually. So apart from this, I am very, very happy to be in the part of Tisha and this is group, and which also by attending the meeting and the workshop and my conference, so that makes my nerve and brain little better to say the word in more casual way, free way. So that helped me a lot. And the consistency also, if you attend any meeting consistently, and practice also consistently, then that word will come out your mouth a little bit easily than earlier. That's I feel. That's all from my side. Thank you so Thank much. you so much, Tapunda. Thanks for your wonderful Sorry, Vidya, words. for interrupting you again. Yeah, no problem, This is Rusha. the thing with online meetings. You interrupt each other.
Kapil, you mentioned your wife being compared to you or like stammering awareness. I think you should definitely once ask her to like join one of our meetings. Like I think we would love to also have her and like speak to her about what Yeah. she thinks about stammering and everything. Like we would love to meet her. Is You that see, attended actually in the Bangalore SHG meeting. I just bring all my family, Oh, including my wow. that's amazing. yeah. Here also you I think, want to bring like you would love yeah, to right. like speak to her. Yeah. Because what happened every Sunday she just asked me, yeah, where are you going? Where are you going? Whom you want to meet every Sunday morning? Then I said, okay, just let's come and have a look. Whom I'm meeting? Yeah, that's Lovely. amazing. Thank you so much for sharing, Tapanda. Yeah. So I think it's about time that we wrap this up. Yes. Vidya, do you want to do the honors of wrapping this session up? So yeah, first of all, I would like to thank everyone here and also those who left the meeting in between, but they have shared their thoughts and thanks to them too. And thanks everybody. Like happy International Stuttering Awareness Day. Yes. Try to talk about stammering to others. Be open and be very talk about your positive relationship with your stammering, and also if you have any concerns, talk about that to them, what you need from them, like if you need like can you please give me some time, or like all those things you can open up the conversation with your friends, what makes you feel comfortable, all those things, because all these small uh, information that you pass on, it's itself is an awareness path. Yeah. So thank you so much everybody. So Rusha, yeah. Awareness Day should not just remain one day of the year, but should go on every day, 365 days of the year. So just to that. And good night, everyone. Happy Diwali. Good night. Thank you so much for being here in the meeting. Yeah. Yeah. Happy Good night. Diwali. Bye bye. Happy Happy Diwali, Diwali. guys.